Hello everyone, how are you? I hope you are all doing well. So, in today's lecture, we are going to continue the chapter Electricity of grade 10, in which in the last lecture we have completed till the current, what is electric current, and what is the SI unit of electric current, and uh, what is the device or the instrument by which we can measure the electric current. Now, in this lecture, we are going to cover the another topic, the next topic, that is electric potential and potential difference. So, what is actually electric potential? So, as in electricity or in some other, we can say randomly in we can say physics, whatever topic we can say the chapter we study, the electric potential is always defined as it is the amount of work done to move a point positive charge from infinity to a point. That is called electric potential. That means हमें एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लाने के लिए, एक स्पेस में एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचाने के लिए जितना वर्क डन रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है. एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही बनता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली इट इज द पोटेंशियल इट इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स. और अगर हम उसके प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस किसे बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस इज अगेन इट इज द वर्क डन to move a positive point charge from one point to another point in the space. ठीक है. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक पॉजिटिव चार्ज को पहुंचाने के लिए जितना वर्क डन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस. एंड the unit of electric potential is volt. 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 Electric potential, the unit of electric as a unit of electric potential is volt. And the device from which we can measure the electric potential difference is called voltmeter. Okay. So these all things we are going to study now. So I am starting with the electric potential. So first topic is electric potential. It is defined as it is defined as the amount of work done, the amount of work done to move a positive charge from infinity to a point to a point. Okay. So that is the electric potential. Let us say there was a point charge called Q at infinity. Now this point charge plus the positive charge is displaced from infinity to a point. Let us say that point is P. ठीक है. There is a point P और वहां तक उसको लेके जाना है. And the amount of work done to move that charge from infinity to that point P is W. This is the work done. Then what will be the electric potential? So electric potential at that particular point will be V equals to W by Q. That's how we define the electric potential. V equals to W by Q, where W is the work done and Q is the charge, electric charge, and V is the electric potential.
इलेक्ट्रिक electric potential. Then what is the SI unit of electric potential? So SI unit of electric electric potential is volt. ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करते हैं देन वी नीड टू राइट ए यूनिट दैट इज कॉल्ड वोल्ट। ठीक। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस, द वेरी इंपॉर्टेंट potential difference. Okay, why do we study the electric potential difference in more detail, or we can say we put more power to this topic? The reason is we cannot measure potential. ठीक है, पोटेंशियल जैसा कुछ नहीं होता है, देर इज ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम फर्स्ट केस की भी बात कर रहे थे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन ऑल्सो it is also defined as that the charge is taken from infinity to a point। तो infinity पे हम potential है उसको जीरो मानते हैं, that the potential at infinity is zero। Infinite at infinity there is zero potential। तब हम जाके बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट P है वहां पे पोटेंशियल है V इक्वल्स टू W/Q। क्योंकि यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस द इंफिनिटी का पोटेंशियल, एंड अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गेट द पोटेंशियल ऑफ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्योंकि माइनस करेंगे इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इंफिनिटी का पोटेंशियल करेंगे तो इंफिनिटी का पोटेंशियल जीरो होता है। तो दैट इज व्हाई वी आर एबल टू गेट द पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। बट व्हेन वी स्टडी इलेक्ट्रिसिटी or we can say the electric circuits, then what we use voltmeter to measure the electric potential difference। ठीक है, दो पॉइंट पे हम उसके दो पॉजिटिव और दो जो नेगेटिव टर्मिनल होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं, एंड वी गेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट जहां पे हमने वोल्टमीटर को कनेक्ट किया है। ओके, देन what is potential difference? The electric potential difference, let me write the definition. The electric potential difference is, या फिर the electric potential difference कहाँ पे है, ये between आएगा। The difference between the electric potential difference between 2 points, between 2 points between 2 points is defined as the work done to move the work done to move a unit charge unit charge from one point from one point to other point, one point to other point। ठीक है, तो ये उसका पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाएगा। मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, लेट अस से देयर इज पॉइंट ए एंड द अनदर पॉइंट इज पॉइंट बी, और एक पॉइंट चार्ज क्यू है जिसको हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो जो वर्क डन होगा दैट विल बी डिफाइंड एज W/A/B, क्योंकि हम पॉइंट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जा रहे हैं, तो द वर्क डन विल बी W/A/B। नाउ we are going to find out that what is
द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी गिवन एज द पीडी। पीडी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, वी ए बी विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी बाई जो उसका चार्ज है, उस चार्ज से हम उसको डिवाइड कर देंगे, पार्टिकल है उसके चार्ज से हम उसको डिवाइड कर देंगे। सो देन वी गेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अब आप इसमें देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो हम इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं। जैसे पॉइंट ए का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है, पॉइंट ए का जो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। ठीक है, इंफिनिटी से पॉइंट ए तक का डिफरेंस ऑन क्यू। और दूसरा क्या हो जाएगा, जो वीबी है, ठीक है, अब वीबी क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी वीबी, वीबी विल बी इंफिनिटी टू पॉइंट बी अपॉन द चार्ज क्यू। तो हम वी ए माइनस वी बी कर सकते हैं एंड फाइनली वी विल गेट द सेम थिंग डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू ओनली, क्योंकि इन्फिनिटी वाला केस उसमें डिडक्ट हो जाएगा एंड वी विल गेट ओनली द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, द वर्क डन from when the point charge is displaced from point A to point B. So that is how we can find out. So यहाँ पे हम जो हमारे पास अगर रिवर्स क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाए और चार्ज दे दिया जाए एंड आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वर्क डन टू मूव दैट चार्ज फ्रॉम पर्टिकुलर वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो वो भी हम कर सकते हैं। So from here we can get the another unit of electric potential, that is क्योंकि जो potential आया है हमारे पास V equals to, in general we write V equals to W upon Q. So the SI unit of work done is joule, ठीक, and the SI unit of charge is coulomb, ठीक है, coulomb. So that is why the potential difference, the other unit of potential difference is, it is जूल पर कुलम, या फिर इसको बोल सकते हैं आप जूल कुलम इनवर्स। बाकी ऐसा यूनिट तो इसका वोल्ट होता ही है, दैट वी ऑल नो। नाउ द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड दैट डिफाइन 1 वोल्ट, हाउ विल यू डिफाइन द 1 वोल्ट। ठीक है, तो वन definition of 1 volt can be written as the potential difference between 2 points. Let me write the potential difference between 2 points, between 2 points is said to be 1 volt, 1 volt when joule of when one joule of work is done, to move 1 coulomb, to move one coulomb of charge from one point to one from one point to other, ठीक है, from one point to other.
तो दैट इज हाउ वी कैन डिफाइन द 1 वोल्ट पोटेंशियल। 1 वोल्ट पोटेंशियल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन शुड बी वर्क डन शुड बी 1 जूल एंड द चार्ज ऑल्सो शुड बी यूनिट, और हम बोल सकते हैं 1 कूलम। तो हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा दैट इज 1 वोल्ट विल बी इक्वल्स टू 1 जूल कूलम इनवर्स। That is how we can define the 1 volt of potential difference. 1 volt of potential difference. Okay, now let us solve a question. अच्छा, इसमें एक वर्क डन का भी फॉर्मूला हम रीअसेंबल कर सकते हैं। वर्क डन WAB कैन बी रिटन एज Q इंटू VAB। ठीक है, VAB जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, WAB इक्वल्स टू Q इंटू VB माइनस VA। Q इक्वल्स टू VB माइनस VA। अगर कोई पॉइंट चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेस किया गया है, तो वहां पे जो पोटेंशियल होगा माइनस द इनिशियल पोटेंशियल विल गिव द पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको हम अगर चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक वर्क डन का इक्वेशन मिल जाता है। सो दैट इज वर्क डन। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द वर्क डन द वर्क डन इन दिस पर्टिकुलर केस इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द पाथ। द वर्क डन इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द पाथ। कौन से पाथ से लेके हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचते हैं, इट डजेंट मैटर। The thing, the matters here is the potential at that particular point. उन दो पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है वही डिसाइड करेगा कि वर्क डन कितना होगा। हम कोई से भी पाथ से चले जाएं, मान लो हमारे पास दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी है, चाहे हम इस पाथ से जाएं, ठीक, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट सी पड़ता है बीच में, या हम इस पाथ से जाएं ऐसे होके जिसमें पॉइंट डी पड़ता है, या फिर हम स्ट्रेट लाइन से जाएं जिसके पाथ में कोई पॉइंट ई पड़ता है। तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं, सारे के सारे वर्क डन, ठीक है, WAB से डिनोट किए जाएंगे, एंड दे विल बी Q इंटू VB माइनस VA ओनली। सो इट डजंट डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है, इट डजंट डिपेंड ऑन द पाथ। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व a question. Let us say how much work, the question is how much work is done in moving a charge moving a charge of 4 coulomb across across 2 points, 2 points having potential difference of the potential difference of 15 volt. This is the question. Now what is given here in this question? The given is the charge that is
4 coulomb, and potential difference. The potential difference is V equals to 15 volt, and we are going to ask, we have been asked to find out the work done here, that is W. ठीक. So as we know that V is electric potential difference, V is W by Q, या फिर कैपिटल Q भी आप लिख सकते हैं अगर चार्ज कैपिटल Q में दिया है तो. So W will be simply V into Q, and you will get that W कितना है, वर्क डन कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 15, and the charge is 4 coulomb. The work done will be in joule. So 15 into 4, that will be W equals to 60 joule. So that is how you can find out the work done. ठीक है, इस तरीके से आप वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन. अगर इसमें सीधा डायरेक्ट चार्ज ने देके कोई ऐसे भी बोल सकते हैं कि लेट अस से क्वेश्चन नंबर 2, if if an electron if an electron is moving from a point A to point if an electron is moving from point A to point B, whose potentials are whose potentials are 5 volt and 3 volt respectively, then what is the work done? What is the work done? तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि what is the charge actually. The charge is not given, so you have to put the charge of electron. ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो हमें पुट करना पड़ेगा. The solution can be written as given. चार्ज गिवन है हमको. चार्ज विल बी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, माइनस ई, और माइनस ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. इतना चार्ज हमें दिया हुआ है और हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, उनका पोटेंशियल पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल दिया हुआ है. तो वी ए इज गिवन एज 5 वोल्ट. ठीक. एंड वी बी इज गिवन एज 3 वोल्ट. वी बी इज गिवन एज 3 वोल्ट. तो अब हमें वर्क डन निकालना है. व्हाट विल बी द वर्क डन. ठीक. सो फॉर दैट व्हाट वी रिक्वायर, वर्क डन विल बी सिंपली ए टू बी क्यू इंटू वी ए बी. अब वी ए बी कैसे निकलेगा, it is the potential difference, so it will be VB minus VA. It is VB minus VA. So VB minus VA
The charge is minus of 1.6 into 10 to the power 19 into VB is 3 volts and VA is 5 volt. ठीक है, 5 वोल्ट है और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल्स. So the work done will be minus 1.6 into 10 to the power minus 19, and 3 minus 5 is minus 2, and finally we will get minus 1.6 into minus 2 will give us the positive value as VAB. 3.2 into my 19 point minus 10 into 10 to the power minus 19 joule. This is the work done. So that much of work done is done to move that electron from point A to point B. अच्छा, इस वर्क डन को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. वर्क डन की यूनिट यहाँ पे हमने जूल यूज किया है, तो यू कैन राइट 1 point, there is a conversion of unit. 1 electron volt can be written as 1.6 into 10 to the power minus 19 joules. 1 electron volt can be written as, these are the two units of energy or the work done. ठीक, तो यहाँ पे कितना वर्क डन होगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट, it is WAB is just, we can say that 2 electron volt of energy. 2 electron volts of the energy or the work done. So 2 electron volts are 2 electron volts of energy, or the work is done here. Okay. Okay. Our next topic is about electric circuit. Now we are going to study the electric circuit. What is the actually electric? हम सबने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया होगा, बट उसको डिफाइन कैसे करेंगे? What is the electric circuit? So for that, we can say that it is a closed and continuous path in which the current flows, and uh, some electric components are used, like the battery or cell can be used. Then any load should be there. Load means you can use bulb, resistor, or some other electric components that we are using for our purpose. ठीक है? And then an electric switch, electric switch can be used, or key can be used. And then if we want to measure the current, then ammeter should be used. Then if we want to measure the electric potential difference, then the voltmeter should be used in the circuit. And if we want to use a fuse, then also it can be used. So that is how we can define a electric circuit. So in words, we can write as a closed and continuous path. Closed and continuous path through which
इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इलेक्ट्रिक current through which electric current flows is called is called is called electric circuit. इलेक्ट्रिक और एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या हो सकता है? सो it consists various electric components such as a source of such as source of current. ठीक है, सोर्स ऑफ करंट बोल सकते हैं आप इसको। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सेल और बैटरी। ठीक है, सेल और बैटरी। और लोड, फॉर लोड यू कैन यूज बल्ब और रेजिस्टर। ठीक। एंड स्विच। ठीक है, ऑन ऑफ करने के लिए स्विच भी यूज कर सकते हैं आप, की भी यूज कर सकते हैं। की, अ फ्यूज, ऑल कनेक्टेड थ्रू all connected through conductor wires। all connected through conductor wires, या फिर हम बोल सकते हैं जो हम यूज करते हैं इन इन आवर होम ऑल्सो, कॉपर वायर्स। ठीक। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो भी दो तरीके का होता है। एक एक को हम बोलते हैं ओपन सर्किट, दूसरे को बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। ओपन सर्किट तब होता है जब उसमें करंट फ्लो नहीं करता, तब हम उसको ओपन सर्किट बोलते हैं। दैट मीन्स द सर्किट इज ओपन, द करंट इज नॉट फ्लोइंग, द पाथ इज नॉट क्लोज्ड। ठीक है, द पाथ, इफ द पाथ इज ओपन, पाथ मीन्स यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक वायर्स की बात कर रहे हैं। और जैसे कि हमने डेफिनेशन में लिखा है, इट इज अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। ठीक है, अगर करंट का पाथ ब्रेक हुआ, then that circuit will be called as open circuit. Then the another one is closed circuit. If the path of the electric current is closed and the current is able to move continuously, ठीक है, then it is called a closed circuit. And for that we use various electric components such as electric switch. Uh, we use key also. ठीक है, so these are the electric components which makes the electric circuit open or closed. या फिर बाय एनी अदर फॉल्ट ऑल्सो द इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी ओपन, लाइक अगर कोई वायर वहां से उसके कनेक्शन से हट गया है तो देन इट वाज आल्सो ओपन सर्किट। या फिर कोई अदर डिफॉल्ट आ गया बाय डिफॉल्ट ऑल्सो, बाय एनी डिफॉल्ट ऑल्सो इट कैन बी एन ओपन सर्किट। ठीक है, तो एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट डिजाइन करते हैं। लेटस से सबसे पहले तो हमें एक करंट सोर्स यूज करना है। सो फॉर दैट आई एम यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। देन मुझे एक यूज करना है देन मुझे यूज करना है एक की जो कि क्लोज्ड है, क्लोज्ड की है। देन मुझे एक यूज करना है बल्ब, ताकि मुझे पहचान
इसको मैं देख के सीधा कि सर्किट मेरा क्लोज्ड है कि नहीं। सो द सिंबल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब इज दिस। ठीक है। मान लो मुझे साथ में मेजर भी करना है कि इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज एमीटर, एंड दैट इज हाउ माई सर्किट इज कंप्लीटेड। ठीक। And as we know that the direction of current is from positive terminal to negative terminal of the battery or cell। ये जो पॉइंट बीच में लगाया हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाया, दैट मीन्स द सर्किट इज ओपन, द की इज ओपन। अगर की ओपन है तो इट विल बी ओपन सर्किट। नाउ दिस इज द क्लोज्ड सर्किट। ठीक है। इसको आप बोलेंगे क्लोज्ड सर्किट। So the circuits are again, as I said, they are of two types. Electric circuits are again of two types. Open circuit और दूसरा है closed closed circuit। तो ओपन सर्किट किसको बोलेंगे? ओपन सर्किट बोलेंगे when there is no flow of current, when there is no flow of current। ठीक है। और क्लोज सर्किट कब बोलेंगे? when there is continuous flow of current, continuous flow of current is there in the circuit, then it is called a closed circuit। अब बात करते हैं हम सर्किट डायग्राम की। दैट वाज द इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन दैट व्हाट इज सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम को इसलिए भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि देखिए आप जब सर्किट डायग्राम बनाएंगे, जब इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, तब हम रियल कंपोनेंट्स यूज करते हैं। जैसे बल्ब है तो बल्ब ही यूज करेंगे, वहां पे सेल है तो सेल यूज करेंगे, एमीटर है तो एमीटर यूज करेंगे। तो उनका जो रियल स्ट्रक्चर होता है, it is it is hard to draw। that is very true that it is hard to draw in a limited time। तो हम हमारा टाइम कंज्यूम ना हो, एंड वी इजीली एबल टू फाइंड आउट दैट विच कंपोनेंट इज यूज्ड। तो उसकी जगह पे हम उनके सिंबल्स यूज करते हैं। जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए यूज करते हैं, उनकी जगह पे हम उनके सिंबल्स यूज करते हैं। एंड उन सिंबल की मदद से जो डायग्राम बनता है, दैट इज कॉल्ड एज सर्किट डायग्राम। ठीक है। सो व्हेन वी यूज the symbols of electric components to design an electric circuit, it is called as electric circuit diagram। So let us define that। it is a it is a schematic diagram। The definition can be written as it is a diagram schematic diagram which represents the relative positions and connections of various various circuit components circuit components circuit components
represented by the symbols. Represented by their symbols. So that is how we can define the circuit diagram. Now what are the symbols? उनका क्या यूज होता है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि what are the symbols. Now I am going to write here the name of the component, the circuit component and its symbol and little bit about their description कि वो कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं उसको. So I am going to describe it. So the first thing that we use is an electric cell. An electric cell. ठीक है. तो रियल स्ट्रक्चर जैसा भी हो बट इलेक्ट्रिक सेल का हम ये सिंबल यूज करते हैं. And the bigger one is the positive terminal and the smaller one is the negative terminal of that electric cell. और हम इलेक्ट्रिक सेल क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में? Because it provides constant potential. It provides potential constant, or we can say consistent potential, constant potential difference between 2 points. Difference between 2 points हमें एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ये प्रोवाइड करवाता है. दूसरा दैट वी यूज इज बैटरी. द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स प्लस माइनस. ठीक है. तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और ये भी सेम ही काम करता है, हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाता है. उसके बाद हम बोल सकते हैं प्लग की और स्विच. प्लग की और स्विच ये भी दो तरीके के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड. तो इसको बोलेंगे हम ओपन. ठीक है. और ये क्या करता है? सर्किट को ओपन करता है. तो ओपन द सर्किट. एंड द नेक्स्ट थिंग इज क्लोज्ड स्विच या फिर क्लोज्ड प्लग की. ठीक है, इसी का पार्ट है. तो उसमें क्या करते हैं हम? डॉट बना देते हैं इनके बीच में. तो इसको हम बोल देते हैं कि क्लोज द सर्किट. नेक्स्ट थिंग इज व्हेन वी जॉइन द वायर. ठीक है. तो वायर जॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, लेटर से ये वायर था, मुझे यहाँ पे एक इस पे दूसरा वायर जॉइंट करना है, तो ऐसे हम बना देंगे इसको. देन वायर इज मूविंग या फिर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग. वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग. तो हमें एक जंप दिखाना पड़ेगा. मान लो ये वायर है और ये दूसरा वायर इसको विदाउट जॉइन के जा रहा है, तो यहाँ पे एक जंप दिखा देते हैं. देन इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं. और नेक्स्ट है रेजिस्टेंस. सॉरी, सो दिस इज द सिंबल यूज्ड फॉर रजिस्टर. और इसके बाद आता है वेरिएबल रजिस्टर.
या उसको हम रियोस्टेट भी बोल सकते हैं। ठीक है। और ये वाला जो रेजिस्टर होता है, इट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस, प्रोवाइड्स कांस्टेंट रेजिस्टेंस। और जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इसका एक सिंबल ये होता है, दूसरा होता है ये वाला। ये हमें ये हमें प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइड्स अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, प्रोवाइड्स अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। और ये क्यों यूज करते हैं हम? टू कंट्रोल द करंट, कंट्रोल द। हालांकि करंट को कंट्रोल तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस भी करेगा, बट अगर हमें पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको कांस्टेंट रखना है, ठीक है, जो हमारे पास जो बैटरी है, सेल है, वो हमारे पास एक कांस्टेंट सोर्स है, देन वी कैन यूज वेरिएबल रेजिस्टेंस टू वेरी द करंट इन द सर्किट। सो दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड। देन उसके बाद हमारे पास आता है एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एज वी नो दैट द एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन द सर्किट। और ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है हमेशा। उसके बाद आता है वोल्ट मीटर। ठीक। द सिंबल इज ऑलमोस्ट सेम, बट इट इज कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड ये हो गए हमारे पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो एक चीज बाकी रहेगी कि हम इलेक्ट्रिक जो वोल्ट मीटर है उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो लेट अस ड्रॉ अ सिंपल सर्किट इन विच, लेट अस से वी आर कनेक्टिंग अ रेजिस्टर हियर, ठीक, जिसका रेजिस्टेंस है आर, और एक बैटरी मैंने यूज किया है, उसका पोटेंशियल है वी, और ये क्लोज्ड स्विच कर लिया हमने यूज। और मान लो हमें करंट भी मेजर करना है तो एमीटर भी लगा दिया। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे? Let us say I want to know that what is the potential difference between two ends of this resistor. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? I need to connect a voltmeter. तो एक इसके दो एंड पॉइंट्स के बीच में मुझे एक वोल्टमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा। So that is how I can connect the voltmeter in the circuit. ठीक है? So that is how we connect the voltmeter in the circuit, and our circuit is completed. Now it can measure the potential difference between two ends of the resistor and the current in the circuit as well. अब what is the reason behind that we use the voltmeter in the parallel combination? क्योंकि the resistance, let me write here, the resistance of an ideal voltmeter is infinity. The resistance of an ideal voltmeter is infinity, and that is why it is connected in the parallel combination. अगर इसको सीरीज में कर देंगे तो इससे करंट पास होगा ही नहीं। ठीक है। So the current, now why we are connecting in the parallel combination, because इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर मैंने इसको लगाया है,
So all the current will be passing through this resistance, and between these 2 points, we will be able to measure the potential difference. I hope you all got the idea. In this lecture, we have studied about what is the potential and इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उससे वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर हमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करते हैं. देन वी स्टडीड इलेक्ट्रिक सर्किट के क्या टाइप्स होते हैं, ओपन एंड क्लोज सर्किट होता है. देन वी स्टडीड द इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, एंड देन how to connect the voltmeter in the circuit, how to connect ammeter in the circuit, and also we have studied about various electric components that we use to construct an electric circuit in our real life. So thank you so much for watching my video. And in next lecture, we are going to study about Ohm's law, and we are going to study about resistance, like what is resistance and what is on what factor it depends. Thank you so much.